So, good evening, everyone. This is Samarth, and today we'll be continuing with the PYQs that we were discussing. And yeah, so we were discussing the PYQs over limits, continuity, and differentiability. It's a club topic, right? It is not evident that एक question एक topic पे होता है. There can be some cases कि एक topic एक question पे, but usually in mains and advanced there is like a combination of these two or these three. So let's continue the questions. अगर हम 8 question करने जाएं, तो what is the 8 questions? we had already done we had already done quite some questions earlier in our previous class at the 2. So now we are continuing with some questions and let's go with the question number 8. What does the question say? Question कह रहा है कि let's consider the function g of x जहाँ पे 1 minus ax, the expression, there's an expression given. I'll not read it through for you guys. Find the value of a such that a and g of 0 so that the function g of 0 is continuous. So we know what is the condition for continuous is. Okay, I used the wrong time, sorry. So yes, so it should be g of 0 minus should be equal to g of 0 should be equal to g of 0 plus. So what do we have here is 1 minus ax plus ax ln a by x square. So at x is equals to 0, it is going to 0, and that limit x tends to 0 should be 0 negative should be equals to limit x tends to 0 positive 2x ax minus x ln 2 minus x ln a minus 1 x square. So both of these are going 0 by 0. So we'll directly apply L'Hopital rule and say get the answer. So it is minus ax ln a plus x times of ax ln a, and there's a ln a already present, and plus I have ln a. And then I'm just applying the product rule, guys. I don't. It is not something out of the world. I'll just say it to you guys that what rule am I applying. So this is what we get by differentiating on both the sides. So let's cancel the ax, and a to the power x. I mean, and I'm just doing the LHS part right now. So minus ln a plus x times of ln a's whole square plus ln a. So this and this gets cancelled, and I'm left with x squared ln a plus 2x. So 1x would be cancelled, and I'm left with ln a's whole square upon x ln a plus 2. So this is what I'm left with, and x going to 0, right? X is going to 0. Question number 8. Yes, x of evidently is going to 0. So at x is equals to 0, my limit of x negative is equals to ln a's whole square by 2. Now solving the RHS. What does my RHS say? I'll just verify it. It is. I'll rewrite. It is x ln 2 minus x over. So let us solve the RHS now. And the RHS solving can be done as it is 2a to the power x now. We can write it as 2a to the power x. So 2a to the power x, so it is, let me just solve it like this. 2a to the power x. So 2a to the power x as so 2a to the power x as it is, then ln of 2a, then minus of x of. So I'm just erasing this and writing it as minus x times of ln 2a, right? Because we can multiply when the two terms are being added. Okay. So now I have to differentiate this, right? So ln 2a remains as it is and x differentiates to whatever it was. And I'm left with at the bottom 2x. So now at x is equal to 0, I'm getting my answer as not correct. So at x is equals to 0, I'm getting
a zero at the bottom, but not a zero at the. No, I'm getting a zero above as well, right? Am I getting about a zero above as well? Yes. So now let's differentiate again. So I'm getting 2a ln this ln 2a whole square. It goes to constant and this. So the limit becomes ln 2a whole square by 2. That is my limit at x positive. X for the at 0 positive. So basically ln of a whole square by 2 should be equals to ln of 2s whole square by 2. So this and this get cancelled, the square and square get cancelled. Or we can write it as ln of a plus minus ln of 2a should equal to be 0. And ln of a so minus won't work because ln of a by 2a is equals to 0 is not valid. So plus would only work. So ln of 2a square should be equals to 0. 2a square should be equal to 1. A can be equals to plus minus root 2. This is what we get. A is equals to plus minus root 2. Okay, so A is plus minus root 2, but we can only take A as 1 by root 2 because it had been already taken as the inner part of the ln because ln can only, the domain of ln is a positive number, so A cannot be negative. So A has to be 1 by root 2 and g of 0 turns out to be ln of A whole square and we are simply solving it. So I hope you got we simply had to just take the limits like the L'Hospital rule. We had to apply L'Hospital rule on both the sides and get the value out. It was a very easier question, I suppose. And of course, properties of lawn can always help you. I would suggest you to please remember your properties. And now moving to the next question. Question number 9. Evaluate sin x by x to the power sin x by x upon 1 minus sin x by x. Okay. So again, it is giving me 1 to the power infinity. See how I decided 1 to the power infinity. Okay, I have to hide the solution. See, I would suggest you guys to never go through the solution, guys. It really messes up your interest, I suppose. I really hate it when I see the solution. It's similar to what I was thinking. Why I went with 1 to the power infinity? Because this term is going to 1 at the limit. This term is going to 1 and this term is going to infinity. So 1 by infinity, sorry, this term is going to 0. This term is going to 0. And 1 by 0 goes to infinity. So 1 to the power infinity is the form of the limit that we are talking about. So now to solve this, what we do is we write it as e to the power sin x by x. Okay, so my bad. Let me write it a bit above. So sin x by x whole divided by 1 minus sin x by x log of sin x by x. And this can be written as minus, right? Yeah, minus 1. I'll find it again. Some help you can take, but not like the basic idea of it. So this is what it is. So sin x by x whole divided by 1 minus sin x by x into sin x by x minus 1 and the limit x goes to 0. Now if we start solving, this and this gets cancelled with a negative sign, right? So I am left with minus 1. So e to the power minus 1 is my answer. Very basic question. Just a direct application of 1 to the power infinity's solution. So this is what we have. Let me just take the questions to avoid any doubts. Let's move to the question number 10. The question number 10 says, let f of x let f of x be equal to x cube minus x square minus 3x minus 1 and g of x is equals to x plus 1 into a and h of x is equals to g of x being divided
2 or whatever f of x divided by g of x. Excuse me. So we know that h is a rational function, and we have to find the condition such that it is continuous everywhere except x minus 1. ठीक है? Limit x tends to infinity, h of x has to go to infinity, and at x tends to minus 1, h of x has to be half. So अगर हमें ये पता है तो हमें फाइंड करनी है दूसरी लिमिट, ठीक है? तो अगर हम let's start with the third question that only seems interesting. Sorry for that. So x cube minus x square minus 3x minus 1 divided by x plus 1a. And now I have to find the limit at x minus 1 now. So 1 रख के देखें यहाँ पे 1 रखने पर what are we getting? 1 is not the root of this. तो ये सॉरी माइनस 1 रख के देखते हैं, माइनस 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 जा रहा है, तो माइनस 1 एक इसका एक रूट है. तो अगर मैं माइनस 1 एक कॉमन निकाल दूँ इससे तो क्या आएगा? कैसे निकाल सकते हो? एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो नहीं, ऐसे नहीं करते. चलो डिवाइड ही कर देते हैं, बड़ा टाइम नहीं लगेगा. डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, सो इट इज एक्स प्लस 1. एक्स माइनस 1 है रूट, तो एक्स प्लस 1 होना चाहिए. सो एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा अपने पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस this gives minus this minus 3x minus 1, so minus 2 minus 2x square minus 2x plus minus x minus 1 minus 1. Okay, so I am left with this becomes x plus 1 into x square minus 2x minus 1 upon x plus 1 by. So I cancel these two out, and at x is equals to minus 1, I'm getting 1 plus 2 minus 1 by a, and that is equals to half. So a becomes 4. A की value जाती है 4. And now I have to find 3 times of h, that is 3 times of f of x by g of x plus f of x minus 2 of g of x. So let us solve. 3 times of x cube minus x square minus 3x minus 1 upon x plus 1 4 times plus x cube minus x square minus 3x minus 1 minus 8 times of x plus 1. So first of all, let's cancel out the term because we know that there is a term here. So I am left with x square minus 2x minus 1, right? And now we have plus of x cube minus x square minus 3x minus 1, x plus 1. Am I getting my a value right? Just let me just check it once, because then a is 4, right? So we can move further. So now at x is equals to 0. So let's put x is equals to 0. So minus 3 by 4 and minus 1 minus 8. So minus 3 by 4 minus 9 minus 39 by 4. Minus 39 by 4 is my answer. So we got the answer. It's very great. Nothing out of the box. Let me erase the solution. Okay. So now moving to the next question. We are already done with the 10th one. So let's move to the 11th. The question says f of x is given as a parts function where it is defined different value for different x. Now it has told us it is continuous at x. So what do we know? At limit x tends to O negative, 1 minus 4 x square is equals to a is equals to limit x tends to O positive
root x root 16 minus plus x. Okay, so I wrote it wrong. It is root of 16 plus root x minus 4. Right, so let's solve it. 1 minus 4x is 2 times square 2x. 2, array, what am I writing? 2 times of sine square 2x upon x square, right? So multiplying by 4 and dividing it by 4. So this becomes 1 and I'm left with 8. So that is my value of a. Simple. What was so tough about it? See, the thing was, अगर हमारा a की वैल्यू निकाले तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं ना, दोनों में कोई वेरिएबल नहीं है, तो अगर आप पहले वाले अगर एलएचएस साइड से निकालते हैं वैल्यू लिमिट की तो भी एट आ रही है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि उस साइड से आ रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज अगर इस साइड से एट आ रही है तो इट्स अ कंपल्शन कि उस साइड से भी आना ही होगा, तो वो तभी कंटिन्यूस हो पाएगा, राइट? और अगर वही वो वैल्यू नहीं है कि तो क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं हो पाता ना। कुछ किस्म होता है कि देयर इज इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कि वैलिड ही नहीं है, कोई देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए, देन यू कैन लाइक if there is an option then you can check the RHS part also, but if there is no option in the RHS that there is no such value of a, then you can simply proceed and write that a की value क्या होगी 8. So we are done with the 8th question also. Now moving on to the 12th part. If you want we can see the RHS limit first, because that is also important कैसे निकाला हमने RHS limit का, तो देखते हैं. अच्छा, let me not read this question to you. Let me give you a minute to read it through. तो आप एक मिनट ले लीजिए और आरएचएस लिमिट देखिए कैसे कैलकुलेट हुई है. ओके. So you guys must have read the solution, what the solution says. So it was a very direct limit calculation. We could already like apply the L'Hopital rule and get the answer. So if you do that, you'll get the answer out. Now moving to the next part, we have the 12th question, that is f of x is equals to limit n tends to infinity and log of x plus 2 minus x to the power 2n sin x upon x to the power 2n plus 1. And हमें examine करनी continuity of f of x at x is equals to 1. तो check कर लेते हैं. But ये थोड़ा सा messy question है because अच्छा f of x ही define हमारा okay. It is not a function of I got what's the problem here. So let us calculate first the limit. What does the limit say? Sorry for that. So एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अपन solution देखते हैं. What is their approach of solving, and then I'll try to get my approach. अगर similar ही हुआ तो then why not? And different हुआ तो we'll get two perspectives. देखते हैं. In order to examine the continuity at x is equals to 1, we are required to derive the definition of f of x in intervals of less than 1, x greater than 1, and x is equals to 0. That is around x is equals to 1.
In order to examine the continuity at x is equals to 1, we are required to derive the function of f of x in the interval x is less than 1, x greater than 1, and x is equals to 1. That is on and around 1. It's a very repetitive question, or it's a repetitive line, sorry. And now, if we check the solution for x less than 1 and greater than 0, we have this kind of solution. And if x is less than 1, so its power to infinity, anything which is positive and it is raised to a power infinity, it would go to 0. So this would go to 0, this would go to 0, and I would be simply left with log of x plus 2. This is what I will be left to. Okay, and now calculating at x is equals to 1. If I calculate at x is equals to 1, so I get log of 3 minus 1 to the power 2n and sine of 1 upon 1 to the power 2n plus 1. So what does it say? This is 1, this is 1. Okay, so simply I'm left with log 3 minus sine 1 upon 2. And then I have, sorry, this was my लेस देन वाले के लिए यानी लेस देन 1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए लेस देन 1 equal to 1 is sine है यार sine 1. Please bear with my handwriting, guys. Writing this with the pen is very tough, like a stylus pen. I'm not like equals to 1. And now for greater than 1, it would go to infinity and infinity, right? Both of these values. So with infinity and infinity into question, I'm simply left with sine of 1, right? And that is also a minus sine of 1. So this is what we have. And now I have to check the continuity at 1. So what am I left with? It is not continuous. Basically, you can simply say that it's not continuous. You can see that earlier also. I didn't get the point why we are writing a function initially when we already put in the conditions of x is equals to less than 1 and greater than 1 and equal to 1. So that seemed a bit waste of the time, but of course. Okay, now moving to the 13th question. Where is my 13th question? This is the 13th question. So we have the 13th question defined as if f of x is differentiable at x is equal to 0, then what is this? The question is what? अच्छा हाँ if is पूछा है हमें देखना है कि है कि नहीं है तो देखते हैं पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है राइट अगर कॉन्टिन्यूस होगा तभी डिफरेंशिएबल हो पाएगा तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं तो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं e की पावर ये तो 1 आ रही है बट e to the power 1x and then 1x का minus 1 by x square. So this is what I'm left with. तो अगर x जा रहा है 0 को so this would go to infinity and this would go to 0. So it is going to 0 basically. तो continuous तो है दोनों तरफ से अगर आप चलो अगर वापस से देखना continuous है कि नहीं है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं तो देखो ये 0 पे कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी को ये 0 पे ले रहा है तो इस पूरे की लिमिट तो इन्फिनिटी जा रही है ना समझ आ रहा है ये 0 है और ये इन्फिनिटी है इन्फिनिटी का 0 इटसेल्फ इज इन्फिनिटी तो ये यहाँ पे पूरा 0 की तरफ जा रहा है इन एनी एक्स तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे जीरोस कॉन्टिन्यूस अब डिफरेंशिएबल देखना है तो एफ डैश ऑफ एक्स देखना पड़ेगा अब एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे we can write the direct derivative also
राइट, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास बचता है 1 + e⁻1x 1 + 1x, ये 1 है। और अब मैं इसको 0 पे चेक करने जाऊंगा तो इन्फिनिटी जा रहा है, और यहाँ पे इन्फिनिटी के स्क्वायर में जा रहा है, बट यहाँ पे एक इन्फिनिटी और बन रही है। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, एक बार सोल्यूशन देखते हैं। अपन एफ डैश कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एफ डैश ऐसा बन रहा है अपना एट 0 प्लस एंड एफ डैश एट 0 माइनस, ऐसा बन रहा है। तो दोनों इक्वल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो वो देख सकते हो। बाकी इफ यू वांट अ डेप्थ सॉल्यूशन वी कैन लाइक delve मोर टाइम ऑन दिस, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 14th क्वेश्चन। 14th question says, this question we already did, right? This expression x cube minus x square plus x plus 1 and g of x is equals to maximum of f of x for every t that is positive and less than x, and x is defined from 0 to 1, and then my g of x is 3 minus x. Okay, discuss the continuity and the differentiability of f of x in the interval. तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं यार, अगर ग्राफ बन जाता है तो our maximum part will be solved. So f dash of x देखते हैं, 3x square minus 2x plus 1. So b square minus 4x, तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो f dash x is always positive, यानी कि द ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग का ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, और एक जगह पे 0 हुआ होगा ये, वो हम निकालेंगे। एक रूट तो होगा बिकॉज f डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट राइट नाउ। उसके बाद हमें ग्राफ मिल गया है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो 0 to 1 के बीच में इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, ये तो मुझे पॉजिटिव ही है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, राइट। तो मैक्सिमम, अगर मेरे पास एक्स की इस वैल्यू पे अगर टी इंक्रीजिंग है तो हमेशा एफ ऑफ एक्स ही रहेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, जी ऑफ एक्स वुड बी एफ ऑफ एक्स फॉर 0 to 1। ठीक है, तो वी गॉट अ वैल्यू, हमें कॉन्टिन्यूटी दिखनी है 1 पे, तो 1 पे देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। देखो 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 2, और इसकी भी वैल्यू 2, तो कॉन्टिन्यूस तो है। अब डिफरेंशियल करके देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो 3x² माइनस 2x+1, और ये दे रहा है -1, तो x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, 3 माइनस 2+1, सो दिस गिव्स मी -2। डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूस है, राइट, वी गॉट आवर आंसर। वेरी सिंपल गाइस, इसमें हमें कंपल्सरी नहीं है कि हर बार यही वाला मेथड हम अप्लाई करें, यू कैन अप्लाई द डिफरेंशिएबल आल्सो एट टाइम्स। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया, बट द कैलकुलेशन दिस इज, बट आल्सो देयर इज द, जब भी हम डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं अपने डेरिवेटिव्स, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि समटाइम्स यू डू नॉट गेट योर परफेक्ट आंसर। तो कभी कभार ये वाला मेथड ज्यादा बेनिफिशियल और रिलायबल हो जाता है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल। हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + g ऑफ एक्स इंटू कैपिटल जी ऑफ एक्स, वेयर लिमिट्स हमें डिफाइन कर दी गई है कि एग्जिस्ट करती है और एक लिमिट 0 है। तो हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल आर। This is a very irritating question, guys. I am not getting into the depth of it because usually for JEE mains and advanced, you hardly get a proving question. I will read it for you guys कि कैसा है कैसा नहीं है, but I'm not solving this for you. I can give a minute for you to
ओके सो बड़ा क्वेश्चन सबने थोड़ा बहुत समझ आया, एक बार देखते हैं व्हाट इज द प्रूविंग द क्वेश्चन सीम्स लाइक, कैसे प्रूव किया उन्होंने कैसे नहीं किया, देखते हैं। सिंपली बाय फॉलोइंग द गिवन कंडीशन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, हमें ये कंडीशन दे रखी है जिसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम ये करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल टू जीरो या x टेंडिंग टू जीरो, देन वी नो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। तो लेट अस गो देयर। अब इसको हम ये एग्जिस्ट करते हैं तो हमें पता है कि x के लिए भी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, तो हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब नाउ अगर हमें इसके लिए लिमिट टेस्ट करनी है एफ ऑफ एक्स के लिए, तो विल राइट दिस एंड वी नो कि ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती है एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, तो वी गेट अ डेफिनेट आंसर। इट वाज वेरी इजी गाइस, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है सॉल्व करने के लिए। इफ यू वांट आई कैन डू सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, बट आई सपोज दिस इज मोर देन इनफ। Let's do some easier ones like the calculating the limits part की limits कैसे calculate हुई है कैसे नहीं calculate हुई। But we'll cut this lecture a bit short because we already discussed this a lot of times. So एक बार कोशिश करते हैं कुछ easier questions करने की। First question देखते हैं हमारे पास है कि do we do some more like good questions rather than these ones? Let me check once. Do we have some solutions of those? Not really. There are some questions. We can look for solutions of those, but then we do not know that these questions are good or not. We have some PYQs, right? So let us go with those only. Okay, let's do this question, the sixth question. So we have limit n tends to infinity and we have to calculate it. So what we can write here is summation of I till n, where I my 1 minus n square. So 1 minus n square, this came in 1984, guys. It was way too easy. N plus 1 by 2. So where n is tending to infinity. So let me take the minus half common. I'm left with n plus 1, n minus 1, n plus 1. And now minus half, 1, 1 plus 1 by n, 1 minus 1 by n, plus 1 by n. And this goes to 1. When we take n is goes to infinity, so I'm left with minus half. So that is what the answer is. Very basic question. You can do this one also, the fourth question. The function f of x, where log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx is not defined at x is equals to 0. The value should be assigned to f of at x equals 0, so it's continuous. Okay. We'll directly apply the L'Hopital rule because taking x is equals to 0, we know it's going 0 by 0. So we'll apply the L'Hopital. So 1 by this multiplied by a minus b 1 minus bx upon 1 should be my answer. So taking at x is equals to 0 now, I get a minus b. So it should be equals to a minus b. As simple as that. Now, let's do another question. Let's do the first one. Let me raise the solutions for the previous question and then I'll do the next one. Let's do the fifth one also. If it's a bit blurry, but it will get readable now. Okay. So if my f of a is equals to 2, f dash of a is 1, g of a is minus 1, g dash of a is 2, then I have to find the value of this. Okay. So one way to go about it is to apply the direct L'Hopital rule again. It would give you a very direct answer. So let's go. G dash of, I'm applying the product rule. G dash of x, f of a, minus g of a, f dash of x, upon upon nothing, upon 1. Upon 1 is my answer. I have to just calculate this and now putting the value of x is equals to a. This gives me 2 into 1. Oh, sorry.
This gives me g dash of a is 2, then f of a is 2, minus g of a is minus 1. Then I have f dash of a is 1 by 1. So this gives me 5. I get my answer as 5. I have to calculate. Let's do something much. Let's do third one. If I'm given g of x is equals to minus root of 25 minus x square, now I have to calculate this, right? So minus times of root this minus g of 1. G of 1 is root of 24. X minus 1. So let's differentiate again. It's nothing half root of 24 minus x square minus 2x plus 1. So minus and minus goes into 0. Or like cancels out. And we are left with 2 by 2 root 24. So 1 by 20 root 24. Yes, I'm pretty sure these questions are very easy from PYQs. I don't know which PYQs are these. Let's these days we do not get such easier questions. There are a bit problematic, but we can practice previous ones. Let's see the 12th one. The limit x goes to 0 root of 1 by 2 1 minus this by x. So now let's differentiate, or let's not differentiate. So let's write it as this. We have a root, we have x. So I'm left with 1 by root 2 sin x by x, a modulus of it rather. And this goes to 1, so I'm left with 1 by root 2. Okay, where did I go wrong now? Hmm. Okay, let's differentiate it. So I'll write it as it is, and 1 minus cos square differentiation is sin square x. So root of sin square x is mod x, so cos x must not see, but I don't know what am I going wrong with this. It is none of these. Is the answer D? Don't tell me it's D. Let's check. 12th answer is D. This C, how is it C? It is D. We are doing previous years, right? So it makes sense. Okay. For a minute, I was short, man. Where am I going wrong? Let's do the 19th one. If my function is defined from real to real and it is a positive increasing function, positive increasing function means f dash x is always positive. See, there is a very direct approach to this question. I'll tell you what. We can write, so we can not actually. No, we can. I'll tell you what. Let's differentiate this. So f dash 3x by this and f dash x, which equals to 1, and now 2 times of. I'm not getting the solution for this. What is the solution for this? One way to go about is calculate it at x cube. X cube is a positive increasing function.
So if I write x cube, so 3x का whole cube upon x का whole cube, I'm left with 27x cube by x cube. And at infinity, it's giving me 27, but that's wrong. It should give me a 1, right? So let me do one thing. Let's not take f of x be equals to x cube. No, but it won't give me a definite answer. Wait, no, give me a definite answer. Let's wait a moment. So letting 3ax cube upon ax cube. No, it is messy. It is not giving me the right answer, guys. No, but it is. Sorry, my bad. No, but it's not. I'll look it up for this question. Where am I going and what is the trick that they're using here? I'll come back to this. Let's do the 27th one. I'm given 1 minus cos 2x 3 plus cos x upon x tan 4x. So 1 minus 2 cos x is 2 sine square x 3 plus cos x upon x tan 4x. So let's multiply and divide by 4x and write this as 1. And let's take 1 sine x and x common. So I'm left with 3 plus cos x by 4x. And this also gives me a 1. I'm left with 3 plus cos x by 2. I'm taking x is equals to 0. I'm getting 3 by 2 as my answer. But it should not be a 3 by 2. Why should it not be? It should be 2 because x at 0 would give me 1. So 4 by 2 is 2. C is the answer. See? Okay. Now let us do which question? Let's do this one. This is similar. This is the same question. Okay, so they are the same question in 2015 and 2011. So how much it tells you about the questions they ask. It's very important that you calculate your or solve your PYQs. Let's do the 30th one. It says P is equals to limit x tends to 0 for 1 plus tan square root x to the power 1 by 2x. And now I have to calculate log P. So let's take for x is equals to 0, it's going 1 to the power infinity. So I'm writing it as 1 by 2x, 1 plus tan square root x minus 1. So this and this gets cancelled. So e to the power limit x tends to 0. I'm left with tan square it is root x by 2x. So it is this goes to 1 and I'm left with e to the power 1 by 2. And that is my answer. Very easy again. These are all JEE-Main question, guys. Nothing too advanced. We are going there. We're practicing up for JEE-Mains right now. So why not? Then we have another question, this limit question. Interesting. We have a multiplication of n plus 1, n plus 2 till n plus 2n. And this is what we have. We are 1 by n. So this is also some would might be confused that what is this form of question. This is again 1 to the power infinity. How is it 1 to the power infinity? I tell you. See, let me just review it. Okay. सो हाउ इज इट 1 बाय इंफिनिटी देखो यहाँ पे कितने 1 से लेकर 2n तक जा रहा है सो यानी कि 2n फैक्टर्स है 2n बार मल्टीप्लाई हो रहा है और हर बार आप एक nn से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे भी 2n वाले n है सो यानी कि 2n नंबर्स है यहाँ पे और हर में एक n का फैक्टर है तो अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको एक नंबर बच जाएगा राइट तो इट वुड टेंड टू 1 और वुड बी ग्रेटर टू 1 बेसिकली सो इट इज समथिंग टू द पावर it's equivalent to the power of 1 and that is in going to the power infinity. तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे हो सकता है देखो 1/n देखते हैं और यहाँ पे अपन करते हैं सबको एक n से हम डिवाइड करके देखते हैं ऐसा डैश डैश तो अपना हो जाएगा 1/2 बट दैट डज नॉट हेल्प तो एक काम करते हैं यहाँ पे लॉग लेते हैं सबसे पहले तो लॉग से सॉल्व करते हैं इसको सब्ट्रैक्शन से नहीं होगा ये लॉग से हो जाएगा तो देखो लॉग ले लेते हैं तो अपने पास बचेगा हाफ ऑफ तो इसको एक बेस पे लिखते हैं लॉग ऑफ n+1 और
ये हो जाएगा log ऑफ n+1 प्लस log ऑफ n+2 डैश डैश log ऑफ n+2n माइनस log ऑफ टू सॉरी log ऑफ n और 2n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब समेशन दिख रहा है अपन को log के ऊपर, तो या तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या तो ऐसा कर सकते हैं कि I'm not getting the solution for this also guys, this is a bit murky, तो इसको छोड़ते हैं, अभी अपन आगे करेंगे। uh, do we have another any other question for PYQ? Let's do 10th question, or the which question do you want me to do? So let's do 25th question. 25th question is nice. So the question says sine of y cos square x upon x square. So very easy. Let's do nothing and take the sine out basically. Or do you want me to differentiate? Let's differentiate, yeah, it's very easy. Sine को जाएगा cos pi of cos square x, and then I have 2 pi of cos x minus sin x, and I'm left with 2x. ठीक, इसको वापस से डिफरेंशिएट कर देते हैं। मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, तो देखो साइन एक्स और एक्स तो चले जाएंगे अपने, और अपना बचेगा कॉस ऑफ पाई ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बीइंग मल्टीप्लाइड ऑफ माइनस 2 पाई cos x by 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस गिव्स मी cos of 0 is 1, cos of pi is -1, so -1 would be cancelled, और यहाँ पे अपने हो जाएगा cos of 0 is 1 pi, so I get answer as pi। So I hope it clears you out। इस वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th वाला देख लेते हैं, चलो। ओके चलो 15 देखते हैं। अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, या हाँ डिटर्मिनेंट है क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, ये कर्व स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, बाहर से तो एक डिटर्मिनेंट है, और अपन को पता है कि कांस्टेंट है, और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो वन वे टू गो अबाउट इट इज कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो, या तो हर एक रो को डिफरेंशिएट करके उसका सम ले लो। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वी डोंट हैव दिस मच टाइम, तो इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कोई, ये वाला करें, ये वाला अच्छा लग रहा है, 13 वाला। हमारे पास दे रखा है ए एंड बी फाइंड करना है हमें तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो एक बार लिमिट एग्जिस्ट करती है देख के लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, let me just let me just erase it and get back to writing। So x square plus 1 minus ax square minus ax minus bx minus b upon x plus 1। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट इंफिनिटी, तो a की वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज द होल न्यूमरेटर टर्म वुड गो टू इंफिनिटी, एंड दैट डज नॉट वर्क, राइट? तो a को 1 होना पड़ेगा, तो हमारा a 1 हो गया, तो उसके बाद एक और वैल्यू हमें पता लग जाती है, ये। सो ये हो जाएगा -x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस, एक माइनस साइन लगाएंगे ना यहाँ पे, माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब नाउ एट एक्स एट इन्फिनिटी व्हाट एम आई गेटिंग, एक्स को डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास बचता है b-1 प्लस 1 माइनस बी बाई एक्स एंड 1 प्लस 1 बाई एक्स। सो दिस इज व्हाट माई टर्म्स लुक लाइक, और जीरो है इसकी वैल्यू, तो बी की वैल्यू भी 1 होगी, ए और बी दोनों इक्वल टू 1 हो जाएंगे, है ना? ए इज 1 एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एक बार चेक करें 13 का आंसर। यस, ओ -1 है। सो लेट अस सी वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, -1 कैसा आ रहा है?
यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्या? प्लस साइन क्यों आएगा यहाँ पे? ए की वैल्यू 1 है। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन है, सो देयर वुड बी अ माइनस साइन हियर ऑल्सो, सो आई गेट बी वैल्यू -1। यस, राइट, बी इज -1। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन विल रैप अप द सेशन। इसका नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। हमें दिया है √(x³ +1 -x -ax -b। तो अगर माइनस इन्फिनिटी पे चाहिए हमें लिमिट, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन है ये। हम्म, एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना हो जाएगा x² -x +1 माइनस, और यहाँ पे माइनस ऑफ, ऐसे लिख देते हैं। और हम यहाँ पे इसके प्लस के वर्जन से मल्टीप्लाई करें तो -ax + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा √(x² -x +1 प्लस टाइम्स ऑफ ax + b। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x² -a² x² -x माइनस दिस +1 -b²। दिस इज व्हाट वी गेट। अब यहाँ पे रूट में है x² -x +1 प्लस a + b। ओके, अब हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ऐसा, तो इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो a की वैल्यू 1 होनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी कर देते हैं यहाँ पे तो वी वो नॉट गेट एन आंसर, राइट? ये सही नहीं होगा, तो a की वैल्यू 1 होगी। a की वैल्यू 1 कर देते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। हम बोलते हैं -x -2xb +1 -b² अपॉन ऑफ x² -x +1 प्लस ax + b। बट ये तो लिमिट गलत है यहाँ पर, अगर -x इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी भी जा रहा है ना। गलत है, a हैज टू बी नेगेटिव देन इन दिस केस। कुछ गड़बड़ी है, देखते हैं, रुको। चलो ठीक है, देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, इससे हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। अगर x की वैल्यू 1 दे रखी है, लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। या 13 का आंसर क्या है? या x a की वैल्यू 1 तो है, दैट्स सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर हमारी a की वैल्यू 1 है, और अब लिमिट एग्जिस्ट करानी है, तो लिमिट की वैल्यू भी दे रखी है ना अपन को। लिमिट 0 है, तो देखो इन माइनस इन्फिनिटी ना, तो -y कर देते तो यहाँ पे +y हो जाएगा, यहाँ पे 2by हो जाएगा, +1 -b² हो जाएगा, √(y² +y +1 -ay + b। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। y से डिवाइड करते हैं पूरी क्वेश्चन को, तो 1 + 2b +1 -b² अपॉन में y अपॉन, यहाँ पे जाएगा √(1 +1/y +1/y² प्लस a, यहाँ पे ब्रैकेट के माइनस, हाँ, माइनस माइनस ऑफ a + b/y। अब अगर मैं इन्फिनिट डाल दूँ तो अपने पास बचेगा, ये 0 इज 0, अपने पास बचेगा 1 + 2b अपॉन 1 -a। तो a की वैल्यू तो 1 है, राइट? तो मैं यहाँ पे y लग देता हूँ, तो ये 1 बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, वो भी नेगेटिव का। तो इसको भी 0 जाना पड़ेगा, और इसको 0 जाना पड़ेगा, तो b की वैल्यू जाएगी -1/2। अगर ये 0 जा रहा है तो ये भी 0 जाएगा, और ये 0 जाएगा तो b की वैल्यू जाएगी -1/2। ओके,
So I think हमने काफी क्वेश्चन कर लिए आज के लिए. So let's wrap up the session. Thank you guys.